हेलो एवरीवन, आई एम संकेत एंड वेलकम टू मिशन तैयारी। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं सोशल वर्क का पेपर डालूंगा। तो ये रहा आपके सामने सोशल वर्क का पेपर 2, जो कि जुलाई 2018 का पेपर है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस पेपर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ फेल्ट नीड्स इज़ रिलेटेड टू। तो पहला का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluation of self based on reflection और social comparison is known as। सेकेंड का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन 3, द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन वर्कर एंड क्लाइंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रिफ्लेक्सिवनेस। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फोर्थ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, life expectancy. Question 5, which among the following is observed as International Day for Natural Disaster Reduction? Fifth का correct answer option number 2, 13th October. Sixth, which one of the following is not a model of social group work? Sixth का correct answer option number 3, functional model. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which among the following is not a dimension of personality? सेवेंथ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, C and E only, perception और discretion. Question 8, developing of feelings slash attitude opposite to the anxiety is। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, reaction formation. Question 9, if conflict between two groups is resolved in such a way that aspirations of both the group are met, this situation is called। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, विन विन सिचुएशन। क्वेश्चन 10, द ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग मोड इज। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन 11, which one of the following is the type of dream mechanism? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, sublimation. 12, a positive correlation is present when। 12th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, two variables move in the same direction. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इससे पहले मैं बता दूं कि इसका हिंदी का भी वर्जन मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के पास, तो उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए और हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, राइट प्रोवाइडेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर। 14th क्वेश्चन, शेड्यूल्स 5 and 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। 15, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव is a principle of। correct answer option number 2, social group work. 16, which among the following is not a model in urban structure। 16 का correct answer option number 3, social inclusive exclusive model. 17, which of the following statements is incorrect with regard to social problems। 17 का correct answer option 3, social problems do not affect all individuals of the society। 18, संसद आदर्श ग्राम योजना was launched in commemoration of the birth anniversary of। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, श्री जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 19, डैश propounds that childhood experiences influence the adult behavior। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शैल बी द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग्स द मेंबर्स अपॉइंटेड इन द एडवाइजरी कमिटी फॉर्म्ड अंडर द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1/2। 21, अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, the state child protection societies are constituted at। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, A and B only, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली एंड स्टेट लेवल ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पॉइंट आउट द मॉडल्स इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एंड सी। सोशल एक्शन, सोशल प्लानिंग, locality development। 23, which among the following is or are not the salient feature of current Indian population। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी ओनली, यानी सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और बॉटम वीक एज स्ट्रक्चर। 24, मैरी रिचमंड in her book social diagnosis describe the three basic categories in the theory of social work practice, choose those three from the given from the code given। तो 24 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है ए, बी, सी, इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट फाइंडिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द 5 स्टेजेस नॉर्मिंग एक्सेट्रा of group development was propounded by। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 टकमैन। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग टी टेस्ट। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एंड डी ओनली, यानी एन इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कंपेयर्स द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। Paired sample t-test compares means from the same group at different times, or one sample t-tests the mean of a single group against a known mean। 27th, which one of the following will not result following the introduction of more decentralized system of management। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 greater consistency in the decision made। 28, according to Zeltman and Duncan, which among the following is not a strategy of social action। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 bargaining strategy। 29, which one of the following act does define a child as a person below the age of 14। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, which among the following days of the calendar year of national importance are correctly matched। तो कौन सा करेक्टली मैच है वो आपको बताना है। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी ओनली बी एंड डी आर करेक्टली मैच्ड। वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च एंड वर्ल्ड अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल। 31, criminal law falls under dash a theory of justice that considers proportionate punishment morally acceptable response to crime। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 retributive justice। 32, the interview guide will be used during interview by इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 interviewer। 33, how many disabilities are listed in the rights of persons with disabilities act 2016। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 21। The 2017 Global Hunger Index report ranked India dash country out of 118 countries with a serious hunger situation। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें से कोई सा भी नहीं था, तो everyone got 2 marks for this question, nobody got any marks because the options were not correct। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल पॉलिसी फॉर persons with disability was adopted in India in the year। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2006। 36, national mental health policy was adopted in the year। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू 2011 census of India the total scheduled caste and scheduled tribes population is। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 16.6% एंड 8.6% रिस्पेक्टिवली। अ मैनेजर मे डेलीगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। 38 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। 39, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कैजुअलिटी कम्स फ्रॉम डैश रिसर्च मेथड। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल। 40, द वेपन्स विथ विच द bourgeoisie filled feudalism
to the ground are now turned against the bourgeoisie itself are the words of 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स. क्वेश्चन 41, what is meant by the term employee empowerment? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 a process of giving employees greater autonomy and decision making powers. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. Maslow in his triangle of human need showed that 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 safety and security is a low order human need. नेक्स्ट क्वेश्चन 43. Organized descriptions of any activity in a structured form is known as 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मॉडल. 44. Which one of the following is not the function of community council in community organization? 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फंड रेजिंग. 45. Client worker relationship is essentially 45 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 purposive. 46. Protection against social contingencies is correct answer option number 4 social security. 47. Cultural differences are emphasized in which year's human development report? Correct answer option number 3 human development report 2004. 48. Which of the following approach makes a shift towards channelizing social services to needy people? Correct answer option number 1 basic needs approach. 49. The calculated value of chi square is correct answer option number 1 always positive. 50. Aaron Beck is related to correct answer option number 2 cognitive therapy. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 51. Which one of the following is not the basis of community? Correct answer option number 3 common political ideology. 52. A man refused to marry within his own village. This reflects as correct option option number 2 exogamy. 53. Who is considered as a father of demography? Correct answer option number 2 T.R. Malthus. 57. Median can be located by which of the following? Correct answer option number 2 Ogive curve. 55. Standard deviation is always calculated from correct answer option number 4 A only यानी only mean. 56. Avoiding anxiety is related to correct answer option number 4 isolation. Next question passage दिया हुआ है. You need to read the passage and answer from 57 to 61. So मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ तो आप लोग पढ़ सकते हो पैसेज को या आप पॉज करके पढ़ सकते हो पैसेज को. मैं स्लोली इसको मूव करता हूँ. So yeah, 57th. How interpersonal skills as social skills are used for effective functioning of an organization? Correct answer option number 2. It helps an organization to effectively correspond and convey information through social communication and interactions. Next question, question 58. What are the benefits of good interpersonal skills? Answer option number 3. It helps in reduction of stress, improving of social standing, augmenting intimacy, resolving arguments and increasing understanding in the organization. 59. How interpersonal skills are developed? Correct answer option number 4. Interpersonal skills are developed with the interaction individual have with family members, attending school, socializing with peer groups, etc. Question 60. How does listening skills help developing interpersonal skills? Correct answer option number 1. One needs to pay close attention and hear as to what other person is saying. He can then only process the information and decipher it and formulate a cogent response. Next question 61. Are interpersonal skills tangible assets for leadership roles and positions? 4 ऑप्शन दिए. ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. They help people to build stronger relationship, rapports and credibility
in any organization which helps people to get recognition and responsibility and aspire for leadership position and role. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion एंड रीजन दिया है. assertion में बोल रहा है सोशल वर्क इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड practice categories: macro, meso and micro, which addresses the issue of larger communities, neighborhoods and individuals respectively. Reason दिया है these 3 levels of social work practice seems to be watertight compartments. Correct answer option number 3. A is true but R is false. Next question 63, again assertion and reason. Assertion: social stratification means division of society into different strata which involves a hierarchy of social groups. और फिर reason दिया है all societies are stratified either based on caste or class system. Correct answer option 1. A and R are correct. 64, assertion: the Department of Empowerment of Persons with Disabilities has the vision to build an inclusive society. Reason: the department acts as a nodal agency for matters pertaining to disability and persons with disabilities. 64 correct answer option number 1. A and R are correct. R is the correct explanation of A. 65, assertion: to solve social problems one must know the causes. Reason: the diagnostic process helps in organizing these causative factors into one whole, thereby making it more meaningful. 65 correct answer option number 1. Both A and R are true but R is the correct explanation of A. 66, decision making process must take cognizance of the policy statement. Reason: policy is the framework for taking decision. Correct answer option number 3. Both A and R are correct but R is the correct explanation of A. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67. Assertion: the third generation human rights are collective rights such as right to development and self determination. Reason: community development needs a human rights based framework if it is to be successful. Correct answer option 1. A and R are correct and R is the correct explanation of A. 68, assertion: case worker must take all and every fact that taken together through logical and inferential reasoning. Reason: logical reasoning would reveal the client's personality and his or her situation for appropriate action. Correct answer option 1. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. 69, assertion: diagnosis may be viewed as fluid, constantly changing assessment of the clients, their problems, life situations and important relationships. Reason: as such diagnosis in social case work is not an ongoing process. Correct answer 69 का option number 3. A is true but R is false. 70, assertion: psychosocial study in an ongoing process that involves exploration, observation and documentation of both objective and subjective facts from a variety of sources. Reason: mutual engagement of the worker and the client in the process is essential. Correct answer option number 2. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Next question. Question 71, assertion: to be empathic, social workers need not put aside their viewpoint to see things from the other person's point of view. Reason: being sensitive to other person's perspective makes social workers more empathetic. Correct answer option number 4. A is false but R is true. 72, assertion: social action leads to social legislation. Reason: existing systematic processes and institutions are challenged through social action. Correct answer option 1. Both A and R are correct. 73, assertion: group interaction should be guided for accomplishment of group goals. Reason: there is a need for free interaction among group members without any guidance. 73 का correct answer option number 2. A is correct but R is not correct. 74, identify the correct sequence of the stages of social movement. 74 का correct answer option number 2. First emergence, then colons, then bureaucraticize, success of failure, then decline.
Next question 75. Identify the correct sequence regarding stages of group formation given by Klein. Correct answer option 3. First orientation, resistance, negotiation, intimacy, termination. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बाय कर्स्ट, एशमन एंड हुल रिगार्डिंग यूज ऑफ स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव इन मैक्रो प्रैक्टिस. 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1. आइडिया, मास्टर सपोर्ट, आइडेंटिफाई एसेट्स, स्पेसिफाई गोल्स, इम्प्लीमेंट द प्लांट, न्यूट्रलाइज अपोजिशन, इवेलुएट प्रोग्रेस. 77. Choose the correct sequence of the year of enactment of the following labor legislations in chronological order. Correct answer option 2. First A, then D, then C, then B. 78. Arrange the following popular social movements in the sequence of their genesis year. Correct answer option 2. B, then C, then D, then A. Next question 79. Sequence the following steps of community organization process. Correct answer option 2. First A, C, B, then D. 80. Identify the correct sequence. Correct answer option 4. First disease, impairment, then disability, then handicap. 81. Arrange the following important days observed in a chronological order in a calendar year. 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. फर्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे, देन वर्ल्ड किडनी डे, देन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, देन वर्ल्ड डिसेबल डे. 82. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग स्टेजेस ऑफ सोशल केस वर्क. करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. इनटेक, स्टडी, social diagnosis, treatment, evaluation, then termination. 83. Out of the following, which one is correct sequence? Correct answer option 3. First editing, then coding, classification, then tabulation. Next question 84. Arrange the process of communication in sequence. Correct answer option 4. First encoding, then channel, then recipient, then decoding. 85 question, match the following. List 1 and list 2 is given. Correct answer is option number 2, A2, B4, C1 and D3. 86. List 1 practice theories and list 2 focus on improvement of social functioning by. So the correct answer is option number 4, A3, B4, C1 or D2. Next question 87. List 1 focus of social work perspective, list 2 perspective. So correct answer is option number 1, A2, B1, C4, D3. 88. Match the following. Correct answer is option number 3, A2, B1, C4 and D3. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 इज कॉन्सेप्ट्स, लिस्ट 2 इज प्रोपोनेंट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, A2, B1, C4, D3. मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 90. लिस्ट 1 एक्टिविटीज, लिस्ट 2 इज कॉन्सेप्ट्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, A2, B1, C3 and D4. Next question 891. List 1 and list 2 is given. Correct answer is option number 2, A1, B3, C2 and D4. 92. List 1 is schemes, list 2 is focus. So correct answer is option number 2, A1, B3, C4, D2. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93. लिस्ट 1 इज थ्योरीज, लिस्ट 2 प्रोपोनेंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, A4, B3, C1 and D2. 94. Which among the following pair is correctly matched? तो
94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड डी ओनली, ओनली ए एंड डी इज करेक्टली मैच्ड। 95, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, A2, B1, C4, D3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ दिया है यहाँ पे फॉर क्वेश्चन नंबर 96 to 100। यू कैन पॉज एंड रीड द क्वेश्चन। So yeah, 96 question. Globalization is an ongoing process associated with, correct answer option number 1, A and B only, production and distribution of goods and services beyond national boundaries, B, free trade principles। Next question, question 97, a social work based definition of globalization encompasses, correct answer option number 1, A and B only, integration of people, integration of economics। 98, the ultimate goal of globalization is, correct answer option number 4, D only, developing a shared awareness of the world। 99, the primary responsibility of social work education in the context of globalization is, correct answer option number 4, E only, aligning with international social work education and practice। 100, last question, to benefit most from the globalization by the developing countries, what needed is primarily is, 100 का correct answer option number 4, collaborative effort transcending national boundaries। तो इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डू कमेंट कीजिए, बताइए मेरे को कि और क्या क्या मैं वीडियोस ला सकता हूँ। सो दैट विल बी हेल्पफुल और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।